बायजू में रॉन्ग क्या हो रहा है? We have heard calls in general sense. Old public भी है I think where Byju sales directors or sales heads are shouting on their teams कि अगर आज इतनी sales नहीं है you will be fired. And literally abusing them, right? So I think that went really bad. The aggressive pressure to grow. The right way of earning money is not glamorous and it takes a lot of time to reach there. Oh, for sure. Right? But what we are seeing as examples are not the right ways of earning money and we are saying, fuck, this is cool. I can also do it. But do you believe that whoever has money has power? I think relationships are more important than money and power, actually, right? Fundamentally, if you look at it, right? It's people who come around literally in the moment of crisis, not the money or power. अब आप जिन स्टार्टअप्स के बारे में लिखते हो, बहुत सारे तो बहुत बड़े भी होते हैं, तो कभी ऐसा डर लगता है कि यार भाई इसने कुछ कर दिया तो? मतलब we have gotten threats. क्या थ्रेट है? Give me an example. मतलब people called कि भाई ये स्टोरी मत कर, घर पे लोग आ जाएंगे. Today's episode is with one of my friends, वैभव वर्धन, जो कि को-फाउंडर हैं Inc42, जिनके साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. नॉट बिकॉज कि मैंने इनके साथ कोई काम स्टार्ट किया था, पर जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट किया था पैंडेमिक के बीच में, तब मैं ना इनके पेज से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ता था, न्यूज़ पढ़ता था, और उस बड़े आर्टिकल को छोटे 3 ways, 3 things to know, 3 things about business के रूप में सबके सामने रील्स बना के लाता था. That is how I know Inc42 and तब से मैं एक एविड रीडर हूँ. ये इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाय गेटिंग द बेस्ट न्यूज़ आउट देयर अबाउट द सिस्टम. कैसे एक मीडिया बिजनेस चलता है, कैसे चैलेंजेस आते हैं, मीडिया बिजनेस में कौन कौन लोग इन्हें धमकाते हैं, क्या होता है. कभी ऐसा होता है कि किसी आपने बहुत बड़े इंसान के ऊपर आपने न्यूज़ लिख दी, तो वो क्या करते हैं आपके साथ. सो वॉच दिस एपिसोड टू लर्न अबाउट मीडिया बिजनेसेस, स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है, VCs कैसे बिजनेस ऑपरेट करते हैं, एंड कैसे तुम पैसे कमा सकते हो इस मीडिया जनरेशन में. बिफोर यू स्टार्ट द शो, राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो तुम्हें एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है. थैंक यू सो मच. यू नो 3 कंपनीज आप बहुत ज़्यादा लिखते हो Inc42 में भी. मेरे को इनके बारे में समझाओ है क्या क्या हो रहा है. ठीक है, I'll tell you. हाउसिंग मेरे को समझना है. वैसे हाउसिंग क्या है? आई थिंक यू हैव नॉट रिटन इट yet. Housing.com. Housing.com. राहुल, We wrote a lot about Rahul. हाँ, राहुल एग्जैक्टली. तो राहुल ने क्या किया उस पर बात करते हैं. फिर बायजूस का क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, व्हाट्स द रियल इशू. एंड देन थर्ड बात करते हैं गो मैकेनिक पे. एक ही करके याद करते क्योंकि तीनों पब्लिक हैं. दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क यू. तो बायजू को बताओ कि बायजू में रॉन्ग क्या हो रहा है. Somewhere Byju, I think the whole aggressive sales model kind of went flat. Right, the whole sales culture they built, the whole sales model they built, where everyone had to sell and the pressure they were in after raising large rounds. That is where I think the whole cord got broken. Because then some people in the team started doing few things which were not the right way to build the business. No one is saying that founder knew or did not knew. We don't know that. But नीचे जो sales heads थे, category managers थे, directors थे, उनको तो targets पूरे करने थे ना. We have heard calls in general sense. Old public भी है I think where Byju sales directors or sales heads are shouting on their teams कि अगर आज इतनी sales नहीं है you will be fired and literally abusing them, right? तो अब यहाँ मैं एक सेल्स वाला हूँ, तो मुझे क्या मतलब है यार, मैं तो बच्चों को फ़ोन करूँगा और कैसे भी करके बेचूंगा. तो आई थिंक दैट वेंट रियली बैड, द एग्रेसिव प्रेशर टू ग्रो. बट डू यू थिंक ये सेल्स वाला ये बहुत सारी लार्ज कंपनीज में होता ही है? एंड आई विल टेल यू, मैं स्पेसिफिक FMCG कंपनीज की याद कर रहा हूँ. जैसे मान लो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स, बट बहुत लार्ज पॉपुलर FMCG कंपनीज, उनका भी बीट वाइज उनके सेल्समैन को दिया जाता है एरिया कि बोले यहाँ पे जाओ, इतने तुमको सेल करके ही आना है, नहीं तो तुम गए. यहाँ पे सिर्फ सेल्स नहीं हो रही थी ना, यहाँ पे सेल्स के साथ साथ उनको लोन भी दिया जा रहा था लोगों को. राइट, सो इट वॉज मिस सेलिंग. आपने मुझे लाइफ बॉय बेचा 10 रुपए का, चलो मेरे 10 रुपए तो गए. यहाँ पे आप मुझे 10 रुपए का लाइफ बॉय भी बेच रहे हो और 10 रुपए का लोन भी दे रहे हो मुझे, जो मुझे पे बैक करना है. राइट, सो आई एम पेइंग द लोन ऑल्सो एंड आई एम ऑल्सो पेइंग फॉर द लाइफ बॉय. Right, so this happened actually practically, right? So I think the aggressive growth pressure and COVID-induced growth was actually thought of real. COVID growth was not real for most of the companies, right? So I think that happened and they were able to raise a lot of money. They acquired Aakash and suddenly you have to grow very fast. And you are touted as the world's #1 tech company, privately listed. World's biggest tech तो सोचो यार, 22 बिलियन 23 बिलियन पे हो आप,
तो आपको तो कुछ भी करके वो losing image is very hard. Yeah. Reaching there is tough, but when you reach there, maintaining that is harder. Right? When you're an underdog, you don't care. Yeah. Right? So that's what sunk cost fallacy or whatever you want to call that. When you are no one, you can do anything. But when you are someone, it's very hard to maintain what you are doing. And you cannot do random things now. So I think that happened a lot for the Byjus of the world in general, that they became too large and they got caught in their own fame, right? So it was like self-created chakravyuh. कि भाई अब तो यहाँ पहुंच गए, अब 22 बिलियन से 2 बिलियन पे तो नहीं आ सकते, और 1000 करोड़ या 2000 करोड़ या 5000 करोड़ के रेवेन्यू से 500 करोड़ के रेवेन्यू पे तो नहीं आ सकते, तो अब क्या करें? See, you're saying they bought Aakash. That was a legend, right? Aakash was a vision of the country. मतलब generations grow up हुई हैं आकाश पे. आकाश ही है. Generations grow up हुई हैं कि कहाँ गए IIT, कहाँ से? आकाश से. मेडिकल आकाश से. तो आकाश तो मतलब आकाश brought the whole coaching culture to the country, right? With कोटा तो बहुत कम लोग जानते थे और कोटा तो बहुत कम लोग जा पाते थे. आकाश was everything. Aakash kind of was the OYO model for education in a true sense, right? Or rather, OYO is a Aakash model for hospitality in the true sense, right? But they acquired Aakash, and after acquiring Aakash, now they've sued Aakash or they've done a case on the founder, and founder is fighting with them. Why? At least as per the reports, as per the media reports, right? I didn't know that. Why? मतलब फिर फाइट क्या, अगर इतना सब कुछ चल रहा था हंकी डोरी, then what's the issue? Why not everyone is coming together on the same page and saying यार हम तो साथ मिलके बना रहे हैं, right? Because और अभी like we read in the news today only, Byju has put 2 of the companies for sale. I think Great Learning and one more. तो मतलब चल क्या रहा है, सीन क्या चल रहा है? तो is it like an asset management company now rather than a tech company? Or is it a tech company who is selling assets? So some of the large companies have become asset management companies, is what I feel. But that's what large companies usually do. If you look at GlaxoSmith or Unilever or these people, they buy brands at a smaller valuation, then they make it big and then they sell it in the But then they are not in the news for the wrong reason and not paying back loans. Yeah. Not paying back dues. I think some hedge fund has sued them in US. Lately, I was reading somewhere. It's public, I guess. Some hedge fund, some random hedge fund has sued them in US over a payment of I think $500 million or $1 billion, something like that. मतलब crazy. कुछ ना कुछ ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ 500 में, और मतलब we are talking about lot of money, dude. एकदम से back to back ऐसा करने लगे कि इंडिया बहुत ही खराब है, इंडिया के स्टार्टअप सिस्टम ही खराब है. I don't think there are so many good stories also. I will हर जगह होता है, मतलब हमारे यहाँ इतने बड़े, तो I was reading a overall value scams, if you want to call them scams, or let's say fraud, scam, misconduct. Yeah. Misconduct is a better word to use it. कि जो इंडिया में पूरे इकोसिस्टम में मिसकंडक्ट हुआ, वो जो लास्ट मिसकंडक्ट हुआ ना यूएस में FTX, उसका 1% भी नहीं है. राइट, एग्री. राइट, उसके पहले जो था थेरेनोस वाला, राइट, पहले से उसके भी कुछ आसपास. यूएस इज वे लार्ज. मतलब वो इतने बड़े उन्होंने क्या क्या किया है, we're not even close. Agreed, but I think it's part of our evolving ecosystem here. Exactly. So there are going to be bad cops, there are going to be good cops. But when you say, why we highlight as India, we will, because we are a country who was never privileged, right? We are not a privileged country lately, right? We have kind of, as a country, we have fought for everything. And when you fight for everything, the society has a different way to look at things around you, right? We're not a capitalist country purely. We're not a capital country, right? Like US. डीप में बताओ उसमें मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? I want to know कि इंडिया हर चीज लड़के मिला है हमें, right? So मतलब since the from the British, and at least some years back, if we go 1930s, 20s, whatever, and the operation we went through, right? After that, everyone in the society fought for everything, from caste system to freedom to politics. It was a perpetual fighting forever to build anything in this country, right? We have seen rocket boys and we have seen how hard it was for them to launch the rocket, right? So, and जैसे हमने इंडिया ने रॉकेट लॉन्च करा, क्या बोला यूएस वालों ने और लंदन ने कि अब पोवर्टी है इनके यहाँ इतनी, पर ये अपने उस पर पैसा नहीं खर्च रहा, राइट? बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड लुक्स एट अस, राइट? कि भाई इनके देश में भी इतनी गरीबी है, ये है, वो है. सेम goes internally for our country also. जो कुणाल शाह भी बोलता है that people are envious वाला direction, that kind of trait comes out, but that will be evident in our country. Any success will have 1,000 eyes to kind of dissect and say have they followed to the T or not. And unfortunately the more responsibility lies on us rather than saying कि यार US में भी होता है तो हम भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं.
वहाँ क्या होता है डज नॉट मैटर, बिकॉज उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, वो इवॉल्व कंट्रीज हैं, देन यू गो एंड लिव देयर ना. Then you go and live there, no one is stopping you to live here, right? But if you're living here, you have to go through the whole grill of what you call it, society courtroom. Where you have to prove that you have done everything right again and again and again. And if you want to fight it, किसी हमें ये नहीं करना है, then you can't escape it. मतलब आपको करना ही पड़ेगा. There is no answer to it. No, fair. I'm not saying that people should escape it और ये उनको जाना नहीं पड़ेगा. मैं बोल रहा हूँ कि all of a sudden sentiment बहुत नेगेटिव हो गया just because कुछ बेकार कंपनी, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इकोसिस्टम बेकार. I agreed. But at the other side, अगर आप ये कंपनीज हाईलाइट नहीं करोगे और ये चीजें हाईलाइट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? हाँ. Then people don't know. People think it's all glamorous. Yeah. It is not glamorous, boss. It is not glamorous. The right way of earning money is not glamorous, and it takes a lot of time. Oh yes. To reach there. Oh, for sure. Right. But what we are seeing as examples are not the right ways of earning money, and we are saying, "Fuck, this is cool. I can also do it." Yeah, that's a great line. मतलब मैं हमारा our logic is that when we write that, we don't write it to defame any particular company, but our logic is larger audience should know. It is not all glory and good things. People go through these grills, and it should not do all this if you have to build a right company. But do you believe that whoever has money has power? No, definitely not. No, definitely not. No, it's a very different tactic. Really? Yeah, I know. This is a larger narrative ना कि भाई तुम्हारे पास अगर बहुत पैसा है तुम पावरफुल हो, फिर क्या टेंशन है? नहीं. There are people जो मान लो अगर एग्जाम्पल कि आपके पास 1000 करोड़ है और मेरे पास 10 करोड़ है तो मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ? क्या बात? Yes, definitely. और कैसे आता है वो? Because of the position or the people? I think position and how well you are connected to with what set of people. But money can buy almost everything, no? But a lot of people cannot be bought. Really? Yeah. Of course, everyone has some price, as people say, but that's not money, right? And again, I will not take names, but like I have seen in my life growing up, some very good people who do not have enormous amount of money, but they have a lot of power, and power is not a bad thing. Power in a good way, right? They're able to help a lot of people on a phone call. They're able to bring the judicial machinery or the government machinery together for the right things without that money. And I've known peer founders and other people literally sitting on 1,000 crores, and they literally have to call other people to help them in the moment of crisis because they have zero relationships. Do you feel relationships are important? I think relationships are more important than money and power, actually, right? Fundamentally, if you look at it, right? So if I would call you and I say, Raj, I need this help, so you will not ask कि अच्छा पहले बताओ कितने पैसे हैं और ये बताओ कि पावर कितनी है. रिलेशनशिप है तो है और नहीं है तो नहीं है. And then you draw your line with each relationship, right? That in your mind you know to which extent will you go. Yeah. And there's nothing wrong in it, right? Because you cannot be 100% available for everyone. Fair. So I think relationships eventually, or people you want to call that, or your active participation in the society, which I think is diminishing as we are going ahead as a generation. Because I'm from Muzaffarnagar, so I go back and I see my father, still normal middle class guy, retired. People still respect him like crazy, and I often used to wonder कि यार ना तो मतलब कोई इससे बहुत पैसा है हमारे पास, ना ऐसी कोई डेजिग्नेशन है या पावर है, ना हम कुछ दे सकते हैं लोगों को ऐसा, right? Which is very transactional in nature. But then why are people so respecting? They're coming for our things. They are doing the work for us. Why? So my dad always say कि यार मतलब यही कमाया है, relationships कमाए हैं, like all of घर वाले. So I think that's true somewhere. I actually started believing it's true now. I think in growing up phase, I had multiple phases where I agreed, disagreed. But I think I started agreeing. We may or may not be able to do. That's our choice. But that is definitely true. It's people who come around literally in the moment of crisis, not the money or power. One of my friends' father was admitted in hospital in Delhi, and very good guy, and had decent money to afford everything. He had to call, including me, 10 other people, and I also couldn't help him much because I don't have much connects in that area. Where he said, please can you ask someone to reach out to the hospital management because they are not putting his father on the ICU machine, a ventilator or whatnot. And he was paying 50 lakhs, 70 lakhs a day, whatever that bill was. But yet nothing was moving. Right? So if only money could solve everything, we would have a different kind of people around us. Right? And especially new age founders or overall tech founders, right? I've not seen them building relationship at all.
It is very, very transactional. Everything is very, very transactional. How do you talk to government people is a different ball game. How do you talk to judicial people is a very, very different ball game. But kind of understanding that, I think we are missing all of this street knowledge somewhere in our school education or even the family education now, because we also want to be very safeguarded. We want our kids to be very safe, right? Earlier our parents used to kind of literally leave us on the road, not literally, but figure it out, like figure it out. But I think it's not happening anymore. Kids are getting very protected environment in every form and shape, which is good in a way, but also bad in a way, because they're very handicapped when it comes to doing anything on their own when they grow up, right? So there was a kid in a company, 21, 22-year-old kid, very amazing guy, good guy. He's earning up 40,000-50,000 rupees salary. Okay. His spends are 70,000-80,000 a month. Whatever he's doing, car, whatever, right? So I asked him कि भाई ये क्यों? तो बोला बट यार मतलब comfort भी तो कुछ होता है ना. बात तो सही है. बात तो बिल्कुल सही करी है. मैं तो कभी सोच ही नहीं पाया ऐसे. जब 50,000 होते थे तो ये सोचते थे कि मतलब 50 में से 5,000 कैसे बच जाएं. True. और वो भी इसलिए क्योंकि कुछ शायद अपनी लाइफ की चीजें पूरी कर लेंगे. जब वो 5,000 इंटू 12 60,000 हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा. अब वो बोल रहे हैं कि पहले कंफर्ट देखते हैं यार, बाकी बातें बाद में. बट वो परेशान भी उतना ही है. फिर एंजाइटी ड्रिवन बहुत ज्यादा है. वो EMI नहीं पे कर पा रहे हैं कार की बिकॉज सैलरी डज नॉट अलाउ, और आपके खर्चे और ज्यादा है. अब घर से लो, उधार लो, जो भी करो यार, व्हाटएवर, बट देन यू विल ऑलवेज लिव इन एंजाइटी. और तुम कैसे प्रोडक्टिव होगे एट योर बेस्ट? तो पीपल, द अदर वे ऑफ सेइंग इट, आई थिंक हमें सिखाया गया था कि डिले ग्रेटिफिकेशन बिकॉज आवर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट एंड इट वाज अ स्कैम ऑलमोस्ट दे डिड विद अस. एंड दीज किड्स आर सेइंग वी वांट द ग्रेटिफिकेशन राइट नाउ, वी डोंट वांट टू डिले इट. अभी चाहिए. कल का भरोसा नहीं है, कोविड दोबारा आ गया तो. So I think that shift I'm seeing very clearly. So I think India is going through that phase right now, is what I feel. If you look at like largely mass India, where a lot of first generation businessmen, entrepreneurs, founders are coming, who are making large money for the first time in life. Yeah. And the dichotomy is ki, even I think in my mind, I'm 30 now. I started at 22. Whatever goals I had in mind maybe are not there. I'm not there yet financially. तो इतनी फाइट क्यों कर रहे हैं? Of course काम है, पैशन है, ब्रांड बना रहे हैं, सब कुछ है. But personally also you're also an individual, right? You're also an individual. You're not just a founder. Yeah. So and you will get married. You will have parents, family, all of that jazz, right? And it catches up, right? Because when you're 20s, everyone is healthy around you. Yeah. Everyone is happy around you. Suddenly when you're in your 30s, your parents get old. Suddenly you have to realize, oh fuck, you want to get married. You might want to, or family pressure or whatever you want to call that. And then the ones who are married, they have kids and they're realizing कि बच्चे को स्कूल भी भेजना है और स्कूल का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है. फिर बच्चे को भी बड़ा करना है. तो ये तो सोचा ही नहीं था. तो मतलब फैक्टर ही नहीं था कहीं पे हमारे प्लान में. और जो फैक्टर इन था वो थी गवर्नमेंट स्कूल की फीस. यहाँ पे चेंज हो चुका है पूरा गेम, राइट? तो पूरा गेम चेंज हो गया है. ये बताओ, लेट्स कम टू मीडिया बिजनेस. ओके, इंडिया पहले में कोई लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज देयर वाज वन थिंग बहुत इंटरेस्टिंग था. जब मैं फर्स्ट टाइम आपके घर आया था दिल्ली में, तब आपने और आपके को फाउंडर ने मुझे बोला था यार हम टिपिकल मीडिया बिजनेस नहीं है, दैट्स समथिंग. हम लोग मस्ती कर रहे थे कुछ एंड टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स एंड यू सेड, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. तो मुझे बताओ टिपिकल मीडिया बिजनेस होता क्या है और क्या गलत चल रहा था जिसके से आपको लगा कि यार मैं ये खो देता हूँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मैं Inc42 करता हूँ? यार आई थिंक इट वाज गलत सही. ओके, सो traditionally media before the digital age was print and TV fundamentally. And print and TV, both the setups and the distribution cost is very high, right? And it's not every day you can set up a TV station or a newspaper or a magazine. The way to reach there is not easy. The digital fundamentally solve this problem for everyone, right? Where they said कि now distribution easy, right? लोगों तक पहुंच जाओगे. So I think when we started, it was not that something was wrong. I think that it did not existed, right? So in 2014-15. One thing we knew कि startup ecosystem or tech broadly is going to be the future. Everyone knows that now. But we could see it in 14-15 because you study US cycles and all of that. And you can see yaar yahi ja rahi janta. India mein we thought there was a huge gap
because no one is bridging what is happening in this ecosystem with the larger audience. Because this ecosystem is very privileged and private in its own self, right? Flipkart ने $1 billion रेस कर लिए, तो अब मतलब मेरा दोस्त जो डॉक्टर है वो कह रहा है मैं क्या करूं, मतलब उसने 8,000 करोड़ रुपए रेस कर लिए तो मैं क्या करूं, right? It almost sounds like when we used to read कि अंबानी, बिरला, टाटा, अडानी के जब हम नाम सुनते थे अपने कॉलेजेस में, and we never thought कि हम बिरला बन जाएंगे. मतलब कोई आम आदमी नहीं सोचता कि मैं टाटा बन जाता हूँ, बिरला बन जाता हूँ, एटलीस्ट बैक देन, राइट? तो बिकॉज यू नो कि यार ये पॉसिबल नहीं. But I think the whole startup ecosystem, the concept was everything is possible. Can you bridge it with the larger audience in their language by solving the terms, by breaking down everything? That was the fundamental of why we started. Okay. And then we realized information सबके पास common है. It's a way of packaging and presenting which matters more than the information. Which is where the design and the whole packaging comes into the play. So I think for us, design and packaging has been one of the key drivers of our growth. So copy and design, and how we package is part of the copy and design. So that has been one key factor. And for us, I think we were very early movers. I wouldn't call first mover. There were a couple of companies who were doing it. We were very early movers. Our design, copy, packaging was up to the mark, which India usually has not seen ahead of its time. And we had a huge belief that the content we are doing is going to become one of the key pillars of the country in next 7 to 10 years, which it has become now. Where startup today is part of Startup 20. Like a G20 with a S20 now, where the Prime Minister is talking about the startup ecosystem, right? Where there's a lot of data which is needed around it. We have raised more than $140 billion as a country in startups. We have more than 90,000 startups. $140 billion raised. 110 plus unicorns, right? And again, unicorn may be a bad term or a good term right now, but it is an index of growth or health of the country in this context, right? A certain level of success. A certain level of success, right? So no one had thought this in 2014 or 15, right? And underconfident country suddenly gets a lot of confidence that yes, we can also do it, right? Yes, we have the talent, we have the means, and it is not as hard as we thought it will be. And you know, the whole every model you see now is coming from those areas where people are just getting up and saying, "यार हम भी बनाते हैं," और बना ही रहे, right? Today's space tech, you see, Chandrayaan is one, of course, great success, but there are too many startups, right, who are building rockets. मतलब रॉकेट बना दिया, मतलब मजाक चल रहा है क्या यार? रॉकेट ही बना दिया आपने. इट्स नॉट इजी यार. आपने सोचा था रॉकेट बनाओगे यार? मतलब कंटेंट तो बात ठीक है यार, रॉकेट बना दिया. मतलब सच अमेजिंग टैलेंट है. पहले भी होगा वो, बट नो वन ब्रॉट दिस टैलेंट टुगेदर एंड सेड कि तुम कर सकते हो, हम पैसा देंगे, राइट? नो वन फंडेड दैट, राइट? एंड it was even not possible to go out and raise money. The opportunity did not existed, right? So for us, the thought process was कि भाई 10 साल में जनता इंडिया यहाँ पहुंचेगा, वर्ल्ड यहाँ पहुंचेगा. Can we play a role in the success of the overall country when it comes to the startup ecosystem? Larger thought process ये था. And then we kept on evolving over the years. And then we said कि यार, if we are helping founders and investors and the operators to create impact, we eventually become one of the big catalyst of overall impact. अब ये तो बता दिया कि चलो मुझे स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, सक्सेस है, ये सब है, राइट? मेरे को प्रोसेस बताओ कि स्टोरीज कैसे बनती है, आती कहाँ से, कैसे, मतलब पता कैसे चलता है, फिर पता चलने के बाद कैसे वेरीफाई करते हैं, फिर क्या, व्हाट इज द प्रोसेस? वेरीफाई होता है नहीं होता है मेरे को नहीं पता. लाइक जस्ट टेल मी. आई थिंक and again I can just generally say for any media company, because I'll tell you, like I want to cut down and tell you something. जब मुझे स्टार्टअप रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाना है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ Inc42 पे, मैं जाऊँगा फोर्ब्स पे, मनी कंट्रोल पे, योर स्टोरी पे, इन सब पे जाके मैं इनसे पढ़ूंगा और फिर मैं बना दूंगा, राइट? आप लोग कहाँ से लाते हैं? सब एक दूसरे से बना रहे हैं. It's a vicious loop. नहीं because all the content creators we read media and we learn from there, and then so here's what I solved and this is what I'm solving through figuring out as well, is like कि same conversation कि भाई ये हो रहा है, फ्लिपकार्ट ने $1 billion उठाया, तो मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ, व्हाट आई एम सॉल्विंग कि ओके ये फ्लिपकार्ट ने किया तो इससे ये अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, इस अपॉर्चुनिटी को तुम ऐसे ले सकते हो, यहाँ से ऐसा होता है, ये होता है. तो मैं बस ओपन कर रहा हूँ कि ओके कैसे हम इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके इजी लैंग्वेज में लोगों को समझा पाए. बट माई सोर्सेज आर यू गाइज. हाउ डू यू गेट सोर्सेज? आई थिंक मल्टीपल सोर्सेज होते हैं. आई थिंक जैसे लेट्स से फॉर अस लॉट ऑफ कंपनीज विल रीच आउट टू अस डायरेक्टली एंड से कि ये करा है,
Sometimes you ask them to show data or proof, sometimes you don't, depending on the nature of the content. And right? credibility. And credibility, right? अब आपकी hypothetically एक किसी यूनिकॉर्न फाउंडर से बात हो रही है और आप उसको कोट कर सकते हो और उसने कुछ बोला है, तो अगर वो कुछ गलत होगा तो आपके ऊपर तो जो आएगा ये आएगा, फाउंडर के ऊपर ज्यादा आएगा, राइट? एंड देन यू आल्सो बिल्ड दिस गट ओवर द इयर्स, राइट? एज अ जर्नलिस्ट, कौन सही है कौन नहीं? हाँ, and it's not me, right? I'm not even a journalist. The folks who work, the actual journalists who actually produce this content, they do the hard work, right? So they build the gut. Right, Pooja, my co-founder, she is the editor-in-chief. She has a lot of gut, and I see this every day. And I ask her कि कैसे, and she said नहीं ऐसे ही. I said नहीं ऐसे नहीं होता, मुझे prove करो. She said कि देख लेना कैसे होगा. And like 2 days down, 3 days down the line, I will hear the same news, right? So you just get the knack of doing things, right? देख के बता सकती हैं लोग ये सही आदमी नहीं है. I wish काश ऐसा होता तो हमारा एक एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस साइड में चल रहा होता. But I think after reading the content or consuming the information, you can start making sense, right? You do figuring out. You hear a lot of podcasts. तुमसे कोई नींद में भी पॉडकास्ट के कोई नंबर पूछ लेगा कि अभी एक वीडियो लॉन्च करी और 1 घंटे में 5 मिलियन व्यूज हो गए, तुम बोलो यार सोने. या फिर तुम बोलोगे कि भाई मतलब कौन जो रोगन आ गया, क्या सीन क्या चल रहा है, राइट? सो इट्स लाइक सेम थिंग, राइट? यू बिल्ड दैट gut plays a very important role for any journalist, because you cannot ask proof of everything, right? So one is companies coming to us, second is credible sources like founders, investors coming on record, then a lot of these people come off record, where they would share a lot of information with us off the record. Anonymous, मतलब we know who they are, but they would share off the record for various reasons. They don't want their name, etc., etc. Why do they do that? Again, they might have their own vested reasons. They might want to do general good. Multiple reasons. Then it's a journalist call to see कि यार इस बंदे के reason क्या होंगे जो मुझे बता रहा है. And based on, if it fits the bill, you go ahead or not go ahead. If you see every media and especially political is branded कि ये तो इस गैंग का पार्ट है. Every media belongs to a gang. मजे की बात है, मीडिया को नहीं पता है बात, बाकी सबको पता है. क्योंकि लोग हमें बोलते हैं बहुत आके तुम इस गैंग का पार्ट हो. तो मैंने बोला मुझे तो बुलाया ही नहीं कभी गैंग मीटिंग में किसी ने. मतलब कोई मीटिंग होगी गैंग की, कुछ होता होगा ना, मतलब कोई कौन सी पार्टी हो तुम, मतलब यार मुझे कोई पैसे दिए गए हो गैंग में आने के लिए. मतलब लोगों के परसेप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है, right? And these perceptions become Chinese whisper, and then Chinese whispers become reality, right? But actually कुछ होता नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं. So when you come to sources again, people tell, companies tell, off the record, on the record. Then we get to know from network a lot. You build this network over 5 years, 10 years, where people tell you a lot of things. Then a lot of employees in the company, when they are getting fired or when something goes wrong, they want to come on record, they want to come off record and tell you. So you eventually build a network, and gut plays a very important role. And then it comes to your ethos, your brand ethos, your internal ethos as an individual, as a journalist, what you will write, what you will not write. Got it. We have done stories, just to complete, we have done stories where we have got threats also. And it's almost like Bollywood. मतलब I was like literally laughing कि मतलब स्टार्टअप में कब से थ्रेट आने लग गए यार. मतलब ये क्या चल क्या रहा है, मतलब we have gotten threats. क्या थ्रेट है? Give me an example. मतलब people called कि भाई ये स्टोरी मत कर, घर पे लोग आ जाएंगे. मतलब ऐसे भी चीजें हुई. आए कभी घर पे लोग? मतलब आए नहीं है, लोगों ने बोला बहुत है कि आएंगे, तो हमने कहा आ जाओ फिर, अब क्या करें. आता तो कोई नहीं है, बट हाँ ये सब बहुत हुआ है, राइट? सो इंटरेस्टिंग है. मतलब काफ़ी डिपेंड करता है आप लाइन कहाँ ड्रॉ करना चाहते हो, और डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे लिख रहे हो. ओके, तो एक बात बताओ मुझे कि ऐसे कभी डर नहीं लगता कुछ किसी चीज़ के लिए? फॉर एग्जांपल अब आप जिन स्टार्टअप्स के बारे में लिखते हो, बहुत सारे तो बहुत बड़े भी होते हैं, राइट? तो पता है कि उनके पास पावर, पैसा, कनेक्शन, रिलेशनशिप सब ज़्यादा है आपसे, एंड प्रॉब्ली दे आर रॉन्ग और राइट, वो अलग बात है, पर वो 1 मिनट में आपका बिजनेस या तो ख़त्म करवा सकते हैं या कुछ चीज़ें गलत करवा सकते हैं, राइट? तो कभी ऐसा डर लगता है कि यार भाई इसने कुछ कर दिया तो? बिकॉज दिस यूज्ड टू हैपन इन ट्रेडिशनल मीडिया लॉट. आई नो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया में जर्नलिस्ट वगैरह रह चुके हैं, और वो बताते हैं कि हम इस स्टेट में इनके बारे में नहीं लिख सकते. अगर लिख दिया तो मैं तो मिलूंगा नहीं मिलूंगा, हमारा प्रेस भी नहीं मिलेगा. It's that level, right? But I think अब नहीं है ऐसा. I think that to your question, the companies who are bigger, they have more money and connections. I don't think so, because
these companies are also coming with the founders of these companies come from a very good pedigree. They are building a legit business on the face of it. They're backed by very credible people. So I don't think कि that's the notion anymore कि भाई मतलब मरवा देते हैं टाइप वाला सीन नहीं चल रहा है. बट डराते तो एक हाथ कहीं और साइड से आता होगा. बिकॉज सो आई नो वन ऑफ दीज कंपनीज, ओके, आई वोंट नेम इट. I know one of the you want me to name everything? No, you want name anything. No, I'm telling you a situation. Sure. So recently one of the companies which is a unicorn, उन्होंने अपना head of security ex army general लगा दिया, right? That is one. Then एक में public policy को head कर रहा है ex IAS who is known for encroachment. Oh, very interesting. वो encroachment हटाने के लिए वो known था, उसको उन्होंने वो public policy का वो बना दिया, well deeply rooted type, sure. right? तो now startups are also doing what the cards like जो corporate houses करते थे. तो जो अदानी अंबानी of the world करते हैं वो startups ने भी करना start कर दिया. So now when let's say a public policy guy or someone who has been XYZ वो डायरेक्ट फोन करता है तो फिर I think times will come. मतलब I think if we do another podcast in 2-3 years, then I think I can answer this better because I can see the whole ecosystem heading towards that side. हाँ मतलब सब ले रहे हैं for their own security. They're bringing people who are known for, you know, like IS officers, security heads, and I think eventually they will start asking media कि भाई ये मत करो वो मत करो. But अभी तक तो it was very intellectual media that way, right? It was not a you know, political media or not you know where you are kind of pushing things in that way. But I think time will come. अभी तक तो हम फिर भी बहुत ही दायरे में चल रहे हैं. अभी तक कोई थ्रेट वेट किसी से मतलब आए हैं. डर लगता है कि नहीं लगता? ये बताओ, लाइक कभी ऐसे ही सोचा कि भाई ये ड्रॉप कर देते हैं? कभी तो क्या डर तो लगता ही है, राइट? जब कुछ लार्ज बड़ी स्टोरीज आप करते हो, बट फिर वही डर के आगे जीते ऐसा आप सोचते हो अपने माइंड में, और फिर आपको ये कंटेंट क्रिएटर्स नहीं जो पूरा माहौल फैलाया है नंबर्स का और पेज व्यूज का आपको दिखता है, फिर आप क्या करोगे, राइट? प्लस यू आर आल्सो राइटिंग, राइट? यू आर बैक्ड विद डेटा है. सो लीगल केसेस वी आर ओके. We're totally okay with legal cases because we have data and we have proof of what we are doing. तो प्रॉब्लम ही नहीं है. So if we are sure about that, we would 99% go ahead. Okay. 99% go ahead. 1% बहुत ही रेयर होगा कि जहाँ पे हमने कुछ ड्रॉप करा होगा. बट टू योर क्वेश्चन, डर तो लगता है. मतलब वी हैव स्पोकन इंटरनली कि अगर ये स्टोरी पब्लिश करते हैं तो हमारे जर्नलिस्ट को अगले एक हफ्ता ऑफिस नहीं आना चाहिए. And they should not be seen in this area. They should be like underground, whatever you want to call that. We've spoken about these things. Maybe we are exaggerating in our mind, but since अगर हमने करी है तो मतलब डर तो लगता ही है, कभी-कभी लगता है. So one more thing I wanted to understand कि पैसे कैसे बनते हैं इस पे? Because if somebody is paying you money, then don't you think you'll then get biased towards that company or that person, and then उनके बारे में न्यूज़ नहीं होगी? Because this traditional media में होता था, right? कि आप स्पॉन्सर दो टीवी पे, एंड यूजुअली हम बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं. ये तो मैंने रियलिटी में नहीं देखा, मूवीज में ही देखा है कि स्पॉन्सर पुल ऑफ कर देंगे, ये हो जाएगा. I'll just quickly summarize how digital media companies make money. Any digital media company primarily will have two revenue models. One is the B2B revenue model and one is a subscription revenue model. B2B is? Right, so I'll just explain B2B. So B2B is where you call sponsored content. B2B is events. Again, some people can say event is a separate revenue line, but we categorize events and everything in B2B. B2B में ही आपका sponsored content आ गया. B2B में भी paid content जो भी आप बोलते हो, event sponsorships आ गई, campaigns आ गए, government का काम आ गया, सब B2B है हमारे लिए. And subscription is purely subscription, right? So you look at NYT, you look at WSJ, everyone would have a brand studio. That brand studio is the B2B arm. Everyone has that. Okay. And that's usually 60-70% of the revenue for a lot of media companies because it's easier to start with. Yeah. Right? Subscription takes years and years to build the right way. Right? The new age companies which are subscription only, they wouldn't go the B2B route. जैसे? A Ken or a morning context, right? Or globally also the information, right? They would only say कि हम subscription only चलेंगे and user money is the real money or the unbiased money, and that gives us the power and freedom to write anything we want because we are not worried about any advertiser pulling off, like you said. So ये primarily एक notion रहता है. But when you come to B2B now, again depend करता है. तो let's say we are very overall as a media, we are also B2B. So we are a very B2B2C media. We don't write for the masses. We are not writing for startups. Startup businesses, right? Primarily. So we are not writing for college kids. So, and hence a lot of B2C brands will not come to advertise with us. So who will come to advertise with us? B2B brands.
right? So I will not take a brand name, but your cloud companies, the banking companies, the fintech, the marketing automation. Got it. These companies will come to advertise on us. And when they advertise, and what do you mean by advertise? Banner ads are dead. Right? Especially if you're a niche media company and not doing 100 million page views, 200 million page views, you cannot make any money from banner ads. So it's all native integration. What is now native integration? So let's say what all we do. So we work with a lot of B2B companies. They want to access CTOs, CFO, CMO of highly valued startups. Okay. So a cloud company will come to me and say, Vaibhav, can you help me connect with top 30 CTOs of $100 million valuation plus companies? Because if they crack one, they would get their $2 million, $5 million, $10 million contract. Yeah. Right? And now when they ask us to connect, it's not that we are a connector company. Can you invite these people in a setup which is very neutral in nature, content driven, which we are also a part of, and there's a genuinely thoughtful conversation happening. So you're using content as a connector, content as a moat. And why do these people show up? Because Inc42 is invited, because we have not spammed them in general sense. And what we are asking them is anyways information not available out there in the market. Yeah. How to scale a large B2C ecosystem, how to scale million user plus website, etc., right? Latency, whatnot, right? You talk about all technical aspects. So it's almost like a Gartner approach. Got it. But not really that. They do much more, but like a Gartner approach, where you are bringing right set of people, like right set of potential customers for these companies together. Got You it. can be physical, virtual, does not matter. A round table or a panel does not matter. These are just formats, right? But you bring them, companies paying you because you're able to bring right set of people and not with a sales agenda in mind. It is non-transactional engagement. It is based on knowledge exchange. So that's where the maximum money comes from. In the B2B sense, for us, that would be a large chunk. Okay. So what's the split between B2B and subscription? I'll come to that just to complete. That's one part. Second part, a lot of brands will come to us like a startup. So I'll just answer that. You said a lot of startups, aren't you biased? So a lot of startups come to us and say, yaar, please मेरे culture पे article लिखो. अभी हमने fundraise कराया. I want to talk more about that. We have just hired a new CXO. We want to talk about that. We are really good in fintech. We want to tell the world what's our lending model, right? And now editorially, you cannot write so much about a company because one, you don't have the bandwidth. Any editorial company will always be small based on the demand you're getting, right? You cannot complete that. So any media company would divide editorial and branded content into two separate parts. So let's say we have some of the large unicorns who are our clients, and one can figure it out and go on our website. But we also write sponsored content on them. And we always, market powered by Brand Labs or powered by this. You always highlight, just trying to be ethical and say, yeah, this is not editorial in nature. The catch is your sponsored content has to be better than editorial content. Otherwise, no one is going to read it. True. And if no one is going to read it, the client or the company is going to say, why am I paying you? So you cannot write random rubbish in sponsored content what people think it should be. The bigger challenge is awareing companies की बॉस आपने हमें पैसा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिखते हैं या आपकी फोटो छाप दें. उनको समझाना कि यार देखो ब्रांड धीरे धीरे बनता है, नेटिवली इंटीग्रेट करने दो, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आता है. बट एट द सेम टाइम वी राइट एडिटोरियली वॉट एवर वी हैव टू राइट, गुड और बैड अबाउट द सेम कंपनीज. Okay. Got it. And if you are saying कि I will pull off my advertising money, please do that. If you cannot differentiate between the two as a company or as a marketing head, that's fine. But then sooner or later you will come around. So no. But here's a catch. But as a platform, आपके यूजर्स फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? जैसे मैं अगर पढ़ता हूँ एक आपका स्पॉन्सर्ड कंटेंट, लिखा है स्पॉन्सर्ड है वो, हाँ, बट फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ कंपनी के बारे में अच्छा, और फिर उसके बाद मैं नॉर्मल कंटेंट अच्छा क्या लिख रहे हो कंपनी के बारे में, राइट? एंड ऑल्सो हाइपोथेटिकली, again, will not name a particular company, but we have spoken about multiple companies and we know a lot of companies जिनका कल्चर बहुत खराब है. ऐसा न्यूज में पढ़ते हैं. अब वही कंपनी मेरे पास आई और बोला मैं पैसा दे रही हूँ, आप मेरे कल्चर पे लिखो, तो नहीं लिखोगे. It's stupidity. Exactly. Right? आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, फिर भी वही कर रहे हो. So these are a lot of gut calls again. Where you say यार ये तो नहीं, obviously this is what we are not going to write. Right? One. Second, I would say कि यार डायरेक्ट प्रमोशन नहीं लिखते हैं. Let's write about something कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप कैसे पहुंचे यहाँ तक. Right? So capturing the nuances of the company in a way that it's not promotional in nature and it adds value to the reader.
Lot of media companies do that. They just literally plain and publish the photo and say कि सब कुछ hunky dory चल रहा है. Like you said, readers know that कि यार ये तो मतलब कुछ गड़बड़ है. तो again, it's a very fine line. Let's ask you 2-3 questions which are very important for my audience. That is कि अगर किसी को मीडिया कंपनी बनानी है, बिकॉज ऑफ मीडिया कंपनी बनाना और जैसे एक्सेस टू मीडिया करना बहुत ईजी हो गया है, राइट? एंड वी हैव ऑल सीन जैसे ब्रूट ने किया कि सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू इतना स्केल कर दिया दैट एवरीबडी नोज व्हाट ब्रूट इज. डू यू थिंक दैट अब मीडिया, किसी को अगर मीडिया कंपनी बनानी तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं? Yeah, opportunities हैं, but fundamentally, and that's a challenge, media is not a fundable business from a VC lens. Forget VC lens, forget fundable business. I'm talking about पैसे बनेंगे, कोई करेगा, किसी को अपॉर्चुनिटी है, पैसा स्केल नहीं हो पाएगा, लाइफस्टाइल बिजनेस बन पाएगा. मतलब tell me 5 media companies in India who do more than 300 crores of revenue a year, and you cannot count TOI or ST or Amar Ujala, and they spend 70 years, 80 years, 100 years doing that. Media is not scalable from a revenue perspective. Depends on what your definition of scalability is. तो मीडिया से धंधा नहीं बनता, मतलब धंधा नहीं बनता, मीडिया 1000 करोड़ नहीं बनते, धंधा नहीं बनता. मीडिया से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आप धंधा बना सकते हो. जैसे क्या? So give me an example. Audience being one of them, right? Like we are talking about education, right? That's one good example. आपने एक अच्छी कम्युनिटी बनाई, अच्छा ब्रांड बनाया, उसके ऊपर आपने एक एजुकेशन की लेयर लगाई, जो यूजुअली सब लोग कर रहे हैं आजकल. जैसे YC I feel is a media business. Is in one way, right? उन्होंने मीडिया बिजनेस बनाया, उनके बैक पे वो पूरा right उनका इंजन जो है, that is a fund that they're lot of companies in India tried content to commerce, did not work, right? So content to commerce तो बिल्कुल ही hard है. जैसे again I wouldn't want to name the companies, but why not? Public information नहीं है, but let's say again I have a lot of respect for Scoop Whoop, right? Satvik, what they built, but even if you talk to Satvik, sometimes he would say कि यार ब्रांड बनाया बड़ा, ऑफ कोर्स एक लेवल तक रेवेन्यू लेके गए, बट सुपर स्केलेबिलिटी नहीं आई. क्योंकि कॉमर्स वाला पार्ट इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कंटेक्चुअल एंड नॉन कंटेक्चुअल का गेम है, राइट? इट्स लाइक कि आप अभी आज लिख रहे हो आप कि लाइक सिमिलर, लाइक यू हैव अ प्रोडक्ट हियर, यू आर राइटिंग ऑन दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट लेंस एंड सडनली यू एक्सपेक्ट पीपल टू कम एंड बाय. इट डज नॉट हैपन. It does not happen. Content to commerce is very hard. तो लार्ज मीडिया कंपनीज बनती कैसे हैं फिर? चलाता कौन है? जैसे पहले जो रह चुकी हैं जैसे NDTV और रिपब्लिक और सर्विस बिजनेसेस, राइट? Service business is purely service business running on B2B, sponsored, sponsors, sponsored content, advertising money. Standard, right? Exactly. Media runs on advertising. बस और कोई तरीका, मतलब लार्ज पैसा कमाने का और कोई तरीका नहीं है. मीडिया रन एंड सब्सक्रिप्शन नाउ इफ यू एट दैट स्केल. सो हियर्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन एंड यू नो दिस इनसाइड आउट. ठीक है कि जब भी आप देखते हो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो ओल्ड हैं वो डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ द मीडियम और द ट्रेंड, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है यूजुअली. जैसे अगर आप बोलोगे तो पहले लोग खरीदते थे किराना स्टोर्स पे, फिर ऑनलाइन खरीदने लगे, तो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मामा अर्थ बोर्ड जैसी कंपनीज बनी, राइट? तो सिमिलरली पहले लोग टीवी पे देखते थे, न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, अब अपना जो उनका डेली मीडिया कंजम्पशन है वो यूट्यूब से करते हैं, सोशल मीडिया से करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से करते हैं. डू यू फील दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लोग तो आएंगे पढ़ेंगे? हाँ, अगेन तो one has to see media from multiple angles when you're talking about being a publisher and a destination website. Like you have your own website, which is a destination website. Then I would say it's hard to make money as advertiser. Like you तो destination मतलब खुद की जगह पे लाना, खुद की ऐप बनाना, ये सब डिफिकल्ट है. So think not tech wise difficult है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ले आओगे, हाँ, पैसा नहीं बना पाओगे, right? But हाँ, अगर आप आज देखो YouTubers are fucking making more money than half the businesses in the country. Technically they're also media. हाँ. So if you look at media largely and entertainment space largely, yes, money can be made. Media has been democratized. Yeah. That's how we are looking at it, right? But as a publisher, as a media publisher, being known for particular topics and areas and making money is going to be very hard. This is the best opportunity, and that's what I want to plug in House of X. नहीं, बिल्कुल हो सकता है. Tell you what. See, that is one content to commerce model which you have cracked, right? And time will tell as we are talking कि कितना scale होता है. Exactly. But that's definitely one good opportunity. So more than that, what I was saying कि I was just talking about problems. Let's just not try to put in our products here and there. The problem is lot of these great commerce companies जिनको धंधा बनाते आता है वो लूज कर रहे हैं बिजनेस क्योंकि उनको अटेंशन कैप्चर करना नहीं आता, राइट? और लॉट ऑफ दीज पीपल जिनको अटेंशन कैप्चर करना आता है
उनसे धंधा बन नहीं रहा है क्योंकि सिर्फ अटेंशन है, पैसा नहीं है। तो इन दोनों का मैरिज कहीं होना जरूरी है, which in a way you kind of did in subtle what way. we're trying to do. Yeah. This is what we're trying to do. Yeah, because you are saying कि attention हमें आता है, धंधा भी आता है, हमें दोनों ही आता है, और आपको सिर्फ अटेंशन आता है, तो आप दोनों साथ आ जाओ, मिक्स कर रहे हैं। इट्स लाइक कि तुम पहले बिजनेस फिगर आउट करो तुम्हें क्या करना है, एंड देन सोचो कि उसके ऊपर तुम मीडिया कैसे बनाओगे, सो दैट तुम्हारा मेन बिजनेस जो है वो एक्सपैंड होते जाए, उसकी अवेयरनेस बढ़ते जाए, क्योंकि मीडिया को तुम वैसे यूज करो। इफ यू आर यूजिंग मीडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लुएंस फॉर अ कोर प्रोडक्ट, then it makes sense. So media is not a core product. If media is a core product, it can be, but it will usually be a lifestyle play, not a super scalable play. And let's say super scalable, we are saying 100 crores as a revenue number in a 5 to 7 year horizon is super hard. Very few people have done scalable नहीं है, scalable. Super scalable तो है in this context, let's say that scalable or super scalable, whatever you want to call that. Your core product has to be something else, and media has to be part of the community, part of the distribution influence. Like a lot of VCs in US say now, right, that every tech company will be a media company. Yeah, it's something like that, right? HubSpot bought Hustle.co. And Hustle.co used to write about sales, everything around sales. HubSpot, a tech company buying a media-ish company. That will be the future of media. That every tech company will say कि यार ठीक है, मेरे users, मेरी community यहाँ है, ये मैं acquire कर लेता हूँ या build कर लेता हूँ. But a core media product alone is very hard to scale. तो फिर do you think कि लोगों के पास opportunity है कि वो किसी niche में बनाए from the preparation of mind कि एक दिन बेचूंगा इसको? हाँ, एक दिन, और किसको बेचूंगा ये भी तो पता होना चाहिए ना, मैं किसको बेचूंगा. But do you think then outcome है कि नहीं, उसमें भी 2-3x से ज़्यादा नहीं मिलता कि है तो मीडिया की ओवरऑल मल्टीपल वैल्यूएशन मल्टीपल इज 4 to 5x of the revenue. But revenue नहीं बन रहा तो आप बोल रहे हो मैक्स, और उसमें भी अगर EBITDA और प्रॉफिट में तो मतलब और दिक्कतें हैं. फिर अगेन सर्विस बिजनेस है ना, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर बिजनेस. There's one thing which a lot of people say कि जहाँ पे जिस भी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और बाइंग पावर कम होती है, वहाँ पे 2 टाइप के बिजनेसेस सबसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं. One is consumer goods business, second is lending business, like banking business. Yeah, and that's what in India banking is one of the if India में देखो, अगर आप देखोगे top 20 कंपनीज में you'll see यहाँ तो consumer goods कंपनीज हैं, मतलब Unilever, P&G, और यहाँ तो बैंकिंग HDFC टाइप की कंपनी. Literally हाँ वही हो रहा है. And the way we are estimating that the country is growing and country's per capita income is growing and purchasing power is growing is not true. मतलब हमारे बबल में हमें लगता है कि बिकॉज सी वी ऑल कम फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स, वी ऑल आर प्रिविलेज्ड टू हैंग आउट विद पीपल हु कैन अफोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स. तो इन आवर बबल वी थिंक यार मतलब सब तो खरीद रहे हैं, सब कुछ तो है, बट ऐसा मासेस में नहीं है. Right, I go to Muzaffarnagar and I was talking to this doctor friend of mine, and I was we talking about some show on OTT, and I said कि शायद Amazon Prime पे है या इस पे है, तो उसने बोला नहीं यार, एक सब्सक्रिप्शन काफ़ी है. I said तू इतना पैसा कमाता है, 2 सब्सक्रिप्शन ले ले. He said नहीं भाई, एक बहुत है. So guy who is making money also and way beyond well to do is also not spending. हमें बबल्स में हमें लगता है कि लोग स्पेंड कर रहे हैं, बबल के बाहर आई डोंट थिंक पीपल आर स्पेंडिंग मनी. बट पीपल स्पेंड ऑन अपग्रेडिंग देयर कंज्यूमर गुड्स. साबुन जो यूज कर रहा था लाइफ बॉय, आज वो डव यूज करता है, जो डव यूज कर रहा था शावर जेल यूज करता है, तो शावर जेल करता है, तो आज दैट इज सिस्टमैटिक कंज्यूमरिज्म, राइट? वी हैव बिल्ट ओवर द इयर्स, राइट? सो दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर. हाँ, सो स्पेंडिंग कंजम्पशन में बढ़ रहा है, राइट? नॉट एवरीवेयर, एंड कंटेंट स्पेशली इज वेरी हार्ड. And again, one good piece which you can also use. Very few people know that we all 3 founders lived together from 9 years. From day 1 till now, all 3 founders we lived together literally in the same house. That you told me. I've seen that. You've seen that. So lot of people like are really surprised कि 3 founders 9 साल से साथ रह रहे हैं. लड़ाई नहीं हुई. I think we have outgrown that phase. But I think we were very young when we started living together. And we all were living like on our own. So we said कि मतलब साथ ही रह लेते हैं. It makes all the sense. And over the years, I think it became very organic, natural. I think now we have our own spaces. Nice. And I think that is the reason I'm not a morning person, because I live with my co-founders. Because we end up talking very late, right? Because you come from office and you're doing operational work there. और ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको आपके आंखों के सामने फाउंडर दिखे, आपका co-founder दिखे और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप नहीं बोलो. तो अगर आप अकेले रह रहे होते हैं, आप बोलते कल बात करते हैं, आप अभी बात कर रहे हो.
और फिर 12 कब बजते हैं और 1 कब बजता है और 2 कब बजते हैं रात को, वो आपको नहीं समझ में आता. But that's good also, right? So I think the reason we have been able to build this brand with so much of love is because literally we lived together from 9 years and kind of kept debated. हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं. So somewhere that gave us good direction of what not to do. Still learning, but still what not to do. So here's, I would want to summarize this for everyone who's watching. Okay? अगर तुम्हें मीडिया बिजनेस बनाना है, सो फर्स्ट इज फोकस ऑन एग्जैक्टली, या तो तुम कोर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बना रहे हो या तुम ब्रांड पे फोकस कर रहे हो. दोनों से एक चीज़ फोकस करो. फ्रॉम डे वन से तुम मीडिया बिजनेस बनाते बनाते बिजनेस बनाने का अगर सोच रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. It's like saying distribution पहले बनाऊंगा और बिजनेस बाद में. It's going to be very hard. It's going to be very hard. And then brand बनाने के लिए one of the things is go very niche, pick up one specific trend या consumer market जहाँ पे बहुत चीज़ें, be the best at it जहाँ पे बहुत बढ़ रहा है. And the secret sauce is live with your co-founders. I wish. And I think जाना चाहिए लोगों को. मुझे समझ नहीं आता लोग आजकल क्यों साथ नहीं रहते. Is it? मतलब generally, the young founders, they are like, they have their own lives going on. Yeah. I'm one of those. I live in solitude. Yeah. I live in solitude, but only in my room. Out of my room, I need 500 people. So that your room is that पहाड़ों पे घर. पहाड़ों पे घर, yeah. That room is that. But you know कि बाहर निकला तो सब दिखेंगे. Yes. और चाहिए. Like I am the kind of person, if I don't talk to my mom, like forget everything else. If I don't talk to my mom every day, I don't feel nice. Like it's I'm that close to my family. But you always lived with family. Yeah. I think that plays a very, very important role. Very important role. Very interesting. Good conversation. Cheers. Thank you so much, sir. Thank you. बहुत लंबी conversation हुई. I hope we could talk more. Thank you so much ये episode end तक देखने के लिए. हमें बताओ कि और ऐसे कौन से गेस्ट हैं जिनको हम ला सकते हैं, या ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम इन गेस्ट से पूछें. और अगर आपके पास कुछ बुक्स के रेफरेंसेस हैं या कुछ आर्टिकल के रेफरेंसेस हैं जो आप चाहते हो कि मैं पढूं, जिससे मैं अपना नॉलेज बेटर कर सकता हूं, जिसकी वजह से शायद मेरी पॉडकास्टिंग स्टाइल और बेहतर हो पाएगी, तो प्लीज़ हमें सजेशंस में बताओ कमेंट्स में, ताकि आपके फीडबैक से मैं एक बेहतर पॉडकास्टर बन सकूं और आपके लिए एक बेटर वैल्यू ला सकूं. Until the next episode, keep figuring out. But before you do that, शेयर दिस विद एटलीस्ट 1 person, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है. एंड वी नीड सर्टन कॉन्वर्जेशंस इन द कंट्री टू हेल्प अस गेट अहेड. थैंक यू सो मच.